In the last lecture, we discussed Maxwell's speed distribution law. Now, today we'll discuss Maxwell's velocity distribution law and the derivations of both of these laws. Now, on the same lines as in case of speed distribution law, the velocity distribution law is also a law to find the number of gas molecules which have a particular velocity in one particular direction. The direction has to be taken into consideration. Say, unlike in case of the speed distribution. Okay. Also, the expression for this number, say, the expression in this law for the number of molecules is a little different from that in case of speed distribution law. A little difference is there because we have to take the direction also into consideration. And also the assumptions made in this case are a little different again from the speed distribution law, taking into consideration the direction also for the velocity. Okay, let us define. First, I will speak the assumptions which have not been written here, but you will have to listen. I speak them and you note it down. Assuming that number one, gas is an assemblage of very large number of gas molecules whose velocities are ranging from 0 to infinity in all possible directions. Number two, the velocity of individual molecule in one particular direction, say x direction, keep on changing with time, but the total number of molecules which have velocity component in one particular direction remains same in steady state, that is at a particular temperature, capital T. So keeping, this means Vx for a given number of molecules will remain constant, irrespective of the other velocity components of this molecule at that instant. Okay, if the velocity of a molecule is changing or decreasing, the velocity of any other molecule in that particular direction will be increasing simultaneously, so that the total number of molecules with that particular velocity component in that direction will remain constant. So keeping these two assumptions into consideration, Maxwell defined the velocity distribution law as the number of molecules having a particular velocity component, say Vx, in one particular direction, that is x direction, irrespective of the other components, that is in y and z direction. That means irrespective of the other components Vy and Vz, in the whole volume, that is for all position coordinates x, y, z, is Ni equal to, Ni is, I stands for a particular group of molecules which have the velocity Vx in x direction. So this is therefore ith cell. So for ith cell, Ni is equal to capital N, bracket starts, m by 2 pi kt, bracket closes, raised to power 1 by 2, e raised to power minus mvx square upon 2 kt. So this is the Maxwell's
velocity distribution law. Okay, the expression also has here dvx multiplied on both sides. Now, why this dvx? If suppose vx dvx is very small range of velocity component along x-axis in the x direction, during which the number of molecules remain almost constant, that is Ni. Then total number of molecules in that direction which have velocity ranging from Vx to Vx plus dVx is equal to total कितने हो जाएंगे? Because at every velocity from Vx to Vx plus dVx, the number of molecules at every velocity remains constant within this range of velocity. Therefore, total number of molecules in this range of velocity from Vx to Vx plus dVx is equal to Ni into dVx equal to capital N bracket starts m by 2 pi kt bracket closes raised to power 1 by 2 into e raised to power minus mbx square 2 kt into dvx. So this is the total number of molecules. This is all about the definition of Maxwell's speed distribution law. Now we come to the derivation of this law. This law, Maxwell's velocity distribution law, this was the velocity distribution law. So this law is based on, as I already said in the last lecture, that whether it is speed distribution or the velocity distribution law, these are derived from the earlier theory called Maxwell-Boltzmann's theory. Maxwell-Boltzmann's theory. Okay. According to this theory, MB theory, number of molecules per unit volume, say that means molecular density, in the ith cell or ith group of the molecules, which is, this group is characterized by the velocity Vi equal to Vxi plus Vyj plus Vzk, and hence characterized by the energy Ei equal to half mvi square equal to half m Vx square plus Vy square plus Vz square of an ideal gas in volume V at equilibrium temperature T is Ni equal to capital A into e raised to power minus beta epsilon I, और EI की वैल्यू एप्सिलॉन I की वैल्यू या EI की वैल्यू आप रख सकते हैं हाफ mv x square plus y square plus z square and root z square. This is the value. Here beta is again a constant at a particular temperature, which is equal to, this is 1 by kt. This is all right. This is the theory. Again, if dvi is a very small range of velocity beyond vi, during which Ni can be considered constant for each velocity between Vi and Vi plus dvi. For every velocity, the total number of molecules remains as Ni. Then, the total number of molecules which have the velocity range from Vi to Vi plus dvi is equal to half. इस velocity से मल्टीप्लाई कर दें, so Ni velocity volume हो जाएगा, this is called
velocity volume dvx into dvy into dvz, इसे आप मल्टीप्लाई कर दें तो अगर n सेम रहता है हर एक वेलोसिटी रेंज के दौरान तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस रेंज इज इक्वल टू दिस इज ni into dvx dvy dvz equal to a constant into e raised to power minus half beta m vx square plus vy square plus vz square into dvx dy dvz. So this is the value. Also, if dv d capital V equal to dx dy dz is a negligible small volume during which the density, that is ni, dvx dvy dvz remains constant, small volume. Therefore, total number of molecules in this range of velocity dvx dvy dvz and also in this small volume dv equal to dx dy dz can be obtained by multiplying both sides of this equation. इस इक्वेशन जो येलो में आपको दिखाई दे रही है उसको दोनों तरफ से dx dy dz से और मल्टीप्लाई कर दें तो we get the total number of molecules which have the velocity range dvx dvy dvz and in small volume dx dy dz is equal to this quantity. ये हो जाएगा. ऑल राइट, ये यहाँ पर थोड़ा सा पावर में आना चाहिए था. ऑल राइट, दिस एक्सप्रेशन हैज टू बी टेकन as power of this. And now this is, now we can find the value of a की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैपिटल ए की वैल्यू. टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज इन द होल वॉल्यूम वी, सारी वेलोसिटीज और सारा वॉल्यूम हो तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन सेम एज एन, कितना एन हो जाएगा. सारी वेलोसिटी सारे वॉल्यूम कैसे हम प्राप्त कर लेंगे, वी कैन obtain it by integrating 6 times, 3 times the velocity integration and 3 times the position integration. टोटल n कितना आ जाएगा, ni dx dy dz dvx dvy dvz or integration 6 times. Now we can put the value of ni as this from the Maxwell distribution, Boltzmann law, Maxwell Boltzmann law, इसकी वैल्यू रख देंगे. और अब क्योंकि थोड़े से वॉल्यूम dx dy dz इंटीग्रेशन, इसके दौरान टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रहते हैं तो ये ni कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर निकाल सकते हैं और इसलिए आप इस इंटीग्रेशन को अंदर ले जा सकते हैं. वी हैव दिस, इसको अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अंदर ले जाएंगे तो ये क्वांटिटी जो है वो जो यहाँ पे आपको दिखा रखी है, दिस इज टेकन एज वी, तो इंटीग्रेशन वी के बराबर हो जाएगा. इंटीग्रेशन 3 टाइम डी एक्स डी वाई डी जेड, इसका इंटीग्रेशन करें तो एक्स वाई जेड हो जाएगा. एक्स वाई जेड तो टोटल वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम वी आ जाएगा, बाकी सारी से कॉन्स्टेंट आपको बाहर आ जाएगी. तो वी हैव ए इंटू वी एन इज ऊपर वाली एक्सप्रेशन से ए इंटू वी हो जाएगी. So this is a into v into this quantity. Again, you can separate these integrals also from each other because x component is totally independent of y and z. Therefore, x जो है y और z से अलग कर सकते हैं. Similarly, y is also independent of x and z, and z is independent of x and y. क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ता है. And therefore this quantity can be taken as, इसको अलग कर दें. अगेन दिस इंटीग्रेशन हमें मैथमेटिकल एंटिटी आती है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक. अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो दिस इज एक्चुअली
1 by a, ये क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए, इंटीग्रल जो है 1 बाई ए हो जाएगा। 1 बाई ए जो हमने पहले डिफाइन किया था, एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, जो कि क्या वैल्यू है, अनरूट m बाई 2 पाई के टी, अनरूट m बाई 2 पाई के टी। तो ये तो क्या है, अनरूट 2 पाई के टी अपॉन m है, तो ये तो उल्टा हो गया, 1 बाई ए हो गया, तो ये क्वांटिटी 1 बाई ए हो गई। या आप भी कह सकते हैं कि क्वांटिटी क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू 2 पाई के टी अपॉन m रूट। तो आप ये वैल्यू रख दें, यहाँ पर तीनों की वैल्यू रखी जाएगी, तो a इंटू वी इंटू 2 पाई के टी m रूट 3/2। तो दिस इज 3/2 रूट नहीं, तो दिस इज 3/2 अपने आप में रूट है। तो दिस इज देयरफॉर a क्या हो जाएगा, बाकी को उधर ले जाए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या n है, तो n a इक्वल क्या हो जाएगा, ये n अपॉन वी, ये n अपॉन वी इंटू ए क्यूब, n अपॉन वी इंटू ए क्यूब। ए क्या है, m बाई 2 पाई के टी रूट। तो ए को अगर आप पूरा लिखें तो क्या बन जाएगा, कैपिटल ए इक्वल टू n बाई वी इंटू m बीटा अपॉन 2 पाई 3/2। यहाँ पर बीटा जो है 1 बाई के टी है, बीटा की वैल्यू 1 बाई के टी है, तो क्या बन जाएगा, m डिवाइड बाई 2 पाई के टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर a। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू इन, अब वो इक्वेशन फॉर ni, इसमें आप वैल्यू बढ़ दें a की वैल्यू, तो टोटल number of molecules which have the velocity range dvx, dvy, dvz, and in a small volume dxy, dx, dy, dz is equal to a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और ये हमारे पास वैल्यू होगी। दिस इज द वैल्यू which is written in a bright box. Now we are interested only in finding the total number of molecules in the whole volume which have the velocity vx in x डायरेक्शन। तो बाकियों के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे, पहले तो हम वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू पोजिशंस से एक्स वाई एंड जेड। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑल इन द होल वॉल्यूम विद वेलोसिटी कंपोनेंट्स डी वी एक्स, डी वी जेड हो जाएगा। जब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट टू या पोजीशन के बेस पर इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये क्वांटिटी हम इंटीग्रेट कर देंगे, इस क्वांटिटी को 3 बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई जेड जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, और बाकी हमारे पास ही बच जाएगा। तो क्या क्वांटिटी होगी, हम एन आई की वैल्यू रख दें, तो दिस क्वांटिटी इज एन अपॉन वी बैट स्टार्ट m बाई 2 पाई के टी, रेट पावर 3/2, ये तो a की वैल्यू थी, इंटू ई रेट पावर माइनस बीटा एम वी एक्स स्क्वायर प्लस एम वी वाई स्क्वायर प्लस एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर बाई 2 इंटू डी वी एक्स, डी वी वाई, डी वी जेड, और इंटीग्रेशन को आप अंदर ले जाए, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है और वॉल्यूम थोड़े से वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं होता है, तो टेकन आउटसाइड, देयरफॉर दिस इज ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स, डी वाई, डी जेड, जिसकी वैल्यू वी होती है। अब कैपिटल वी यहाँ पे रखेंगे तो वी से भी यहाँ पे कट जाएगा, डिनोमिनेटर में भी एन के बटे में वी है, तो ये इधर ये भी कट जाएगा, बट इंटीग्रेशन के द्वारा आएगा। ऑलराइट, तो वी गेट हियर एन आई डी वी एक्स, डी वी वाई, डी वी जेड इक्वल टू दिस क्वांटिटी, सेम एक्सप्रेशन, और राइट साइड में ये आ जाएगा। ऑलराइट, वी से वी कट जाएगा। नाउ वी आर इंटरेस्टेड ओनली एन आई डी वी एक्स, जो कि मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाया, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे 2 बार इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वी वाई एंड वी जेड, डबल इंटीग्रेशन, वी गेट दिस क्वांटिटी। So integrating
यू गेट, दोबारा इंटीग्रेट कर दें इसको। तो सारे कंपोनेंट हमने यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स जो y और z डायरेक्शन में थे सारे लिए, और x डायरेक्शन का केवल एक कंपोनेंट vx लिया है। तो दो बार इंटीग्रेट कर देंगे तो वी गेट दिस क्वांटिटी ni की। अगेन ऊपर वाले एक्सप्रेशन को आप दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ni dvx, और राइट हैंड साइड में इसी को दो बार इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। दिस इज क्वांटिटी और n ब्रैकेट स्टार्ट m by 2 pi kt into raised to power 3/2 into e raised to power, इसको तो हमने इंटीग्रेट किया नहीं था, माइनस एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी डी वी एक्स, और फिर इंटीग्रेशन इधर आ जाएगा क्योंकि एक्स कंपोनेंट जो है वाई और जेड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए उसको बाहर निकाल लिया और अंदर इंटीग्रेशन जगह वाई और वी जेड के लिए। तो ये हो जाएगा, मैंने ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन दी ई की पावर उसको भी अलग कर दिया था, तीनों को सम था, इसलिए पावर अलग हो जाएगी, ई रेट पर ये क्वांटिटी आ जाएगी अलग कर दी। राइट, दैट सिंपल। और अब आप इंटीग्रेट करें तो वही एंटिटी यूज़ कर लेंगे, ये क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी दिस अगेन 1/a, फिर 1/a है, 1/a का मतलब 2 pi kt अपॉन m रूट, तो दो बार 2 pi kt अपॉन m रूट यहाँ से आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 pi kt अपॉन m का रूट का स्क्वायर, यानी m 2 pi kt अपॉन m, और ऊपर 3/2 है बट m 1 है तो हाफ रह जाएगा, और कट जाएगा इससे। देखो गेट ni dvx, total number of gas molecules which have the velocity component in the range vx to vx plus dvx in x direction irrespective of the other y and z components, considering all other components along y and z direction in the whole volume of the gas is equal to this quantity. n bracket starts m by 2 pi kt raised to power 1/2 e raised to power minus m vx square upon 2 kt into dvx. This is same as the Maxwell velocity distribution law, and this is about the derivation. Thank you.